Dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss about law of diminishing marginal utility DMU. How we are representing DMU. This is the short name DMU, but full form is here diminishing marginal utility. With the help of this table and this graph, today we will discuss marginal utility and law of diminishing marginal utility. Okay, so dear students, before starting this topic, we have to go backward in last lecture studies. Yesterday I had taught you about that utility. Yesterday I had taught you about utility. Utility means उपयोगिता. हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जिस सामान का इस्तेमाल करते हैं उसे उपयोगिता कहते हैं. लेकिन आप सबको ये पता है कि आपकी उपयोगिता कभी घटती है तो कभी बढ़ती है. कभी आपने किसी भी सामान को 5 किलो खरीदा तो कभी किसी दिन वो सामान आप 2 किलो खरीदते हो, किसी दिन 15 किलो खरीदते हो, किसी दिन 50 किलो खरीदते हो. पर डे इट शुड बी गोइंग इंक्रीज और डिक्रीज. व्हाट इज द चेंजेस वी आर गेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट वन इज कॉल्ड एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी. जो रोज हमारी उपयोगिता में परिवर्तन आता होता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. सो इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव रिटन टोटल यूटिलिटी. इसलिए मैंने आपके सामने टोटल यूटिलिटी को लिख लिया है. मतलब मैं कितने सामानों का रोज इस्तेमाल करता हूं मैंने उसे यहां लिख दिया है, टोटल यूटिलिटी. अब इस टोटल यूटिलिटी के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. विद द हेल्प ऑफ दैट टोटल यूटिलिटी we can able to calculate marginal utility. Okay, so now dear students we have to continue here. Unit consumed, I have written in front of you unit consumed. How many units we had consumed? See here, 1 unit consumed, total utility 10. Second unit consumed, total utility 18. How we are going to improve the utility is improving day to day. See, 10, 18, 24, 28, 30, 30. Now it should be decreasing. So starting this topic already I had told you the topic, the marginal utility should be in the positive and negative both. So now we have to calculate utility. And dear students, see very carefully how we can able to calculate marginal utility. So marginal utility we have to calculate with the help of differences of these all. So when we have to calculate marginal utility, first of all we have to write 10. Okay, wait. Just for a minute. We have to write 10. They have to write 10. After that, you know very well, the numbers should be increasing. 8, 10 to 18. 10 से 18 हो रहा है तो उसमें से हम उसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना? 8. ठीक है, वेट फॉर ए मिनट. थोड़ा मैं फिर से लिख दूं, डार्क नहीं है वो. 8. Next one is given in front of you 24. Then it should be 6. Next should be given in front of you 28. Then 4. Next should be given in front of you then 2. Here 30 and 30. Then marginal utility 0. इस चीज को ध्यान दीजिएगा. Wait for a minute. Total utility 0. Next we have to come on the topic
30 एंड 28, अब -28 हो रहा है यहाँ, तो मतलब घट रहा है, तो -2 होगा, -2 -4 एंड -6। ओके, अब ये हो गया हमारी टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी आपको पता चल गई कैसे निकाला गया मार्जिनल यूटिलिटी, इन्हीं नंबरों में से इन्हें घटा के लिखा गया है। सपोज इन एग्जाम मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन, देन व्हाट यू विल डू, मार्जिनल यूटिलिटी दिया होगा तो टोटल यूटिलिटी को हम ऐड करके लिख लेंगे। मान लीजिए इसे भी मिटा दिया जाए ना हो तो आप 10 लिख देंगे, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30 already, 30 - 2 28, 28 - 4 24, 24 - 6 18. This should be given in front of you. This is the process, with the help of that you can able to solve. Now you have to come on the topic. Here graph is given in front of you, that total utility is a maximum 30. Two graph is given in front of you. First graph is for total utility, second graph is given for marginal utility. दो ग्राफ आपके सामने रखे गए हैं। पहले ग्राफ को आप मार्जिनल यूटिलिटी के लिए बनाओगे, दूसरे ग्राफ को टोटल यूटिलिटी के लिए बनाओगे। ठीक, तो मैंने इसको टोटल यूटिलिटी किया है, इसको मार्जिनल किया है, ऊपर नीचे दोनों को एक साथ बनाते हैं। देन वी हैव टू टेक द नंबर, wait for a minute, numbering should be हम नंबरिंग ले लेते हैं। ठीक है, हियर मैक्सिमम 30, तो मैक्सिमम 30 यहां बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम गैपिंग कर लेंगे 5 5 का, 5 10 15 20 25 एंड 30 पॉसिबल। दिस इज द प्रोसेस टू मेक ए ग्राफ। ऐसे ग्राफ को बनाया जाता है जो अंक हमारे लिए पॉसिबल ना हो। और आप देखो इसके अनुसार इस ग्राफ में टोटल यूटिलिटी TU जब हमारा 1 था तो टोटल यूटिलिटी 10 थी, तो हम यहाँ 10 पे डॉट कर ले रहे हैं। ओके, एक डार्क यहां किया, थोड़ा आपको बोर्ड पे बड़ा दिखे इसलिए मैं बड़ा डार्क बना रहा हूं। सेकेंड 2 देन हियर 18 हमारा यहां कहीं होना चाहिए 20 के पास में। ओके, क्लियर। थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग 3 and 24 will become here near about. This is the white board, it will be, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, व्हाइट बोर्ड पे टेढ़ा बन सकता है, बट यू विल मेक द कॉपी इन ग्राफ। जब कॉपी पे बनाओगे, ग्राफ पे बनाओगे तो 100% नीट एंड क्लीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, डोंट वेट, शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। नाउ 4 28 20 8, now 5 30, 6 also 30. So numbering you are getting this marking. ये मार्किंग आपको बोर्ड पे दिखे तो अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज द व्हाइट बोर्ड एंड दिस इज द स्मॉल वीडियोस विजुअल। Next one is the going 7 28, next 8 24. See students, this is the line, with the help of that you have to make, and 9th one 24,
8 9 24 30 and 10th one 9th one 18 कितना होना चाहिए 18 18 कहाँ रहा है ओके so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dot will be there and 9 numbers are there. With the help of that you have to match it. See, on that process we are going to make okay. This graph is making TU. TU means total utility. Okay, this is the TU, total utility we are showing. Now we have to come here in marginal utility. With the help of that we have to know marginal. When 1 is there on that time 10, then 1 10. See, so big dot I will make. Second we have to go 8. Okay. Third we have to go 6. Next we have to go 4th 4. Fifth 2 and sixth one is already 0. The dot will be here. Okay. After that, dear students, we have to go in the -1 down side. Okay. Seventh one is a -2. Then -2 will be here. Next one -4. Next -6. Okay, this line I had made here. When you have to prepare, you have to make with the help of scale. It should be very neat and clean. See the line I had matched. This is the table. When you will make, dear student, it should be very straight. जब आप बनाओगे तो ये 100% नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बनेगा. मेरे द्वारा ये बनाया कि विदाउट स्केल आई एम प्रिपेयरिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड. दैट्स वाई वी विल राइट इट एज MU, marginal utility. MU I written here MU. This is a marginal utility and that one is the total utility graph. You had seen here is that corresponding topic. On 6th one when you have to represent it should be cross that. ऐसे ये क्रॉस करेगी दूसरे को. ठीक है. So when you have to prepare, you will make straight line, but here I am preparing on the whiteboard. That's why line should be some changes. So we have to know. ठीक है. आप जब बनाओगे तो ये लाइन बहुत स्ट्रेट बनेगी because you will make with the help of scale and I had made it with the help of marker. That's why lighting should be some changes. Okay. ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी. थोड़ा ध्यान से आप बनाएंगे. थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा भी बन रहा है, आप इसे थोड़ा ध्यान देंगे. ओके. व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर दीज लाइंस इट शुड बी क्रॉस ऑन दैट पॉइंट. थोड़ा मोटा बना दीजिए हम, आपको देखने में दिक्कत ना हो.
Okay, these lines are touching to from each other. This is the part of explanation. From A we can say A, and this is the B. Okay. With the help of this explanation, you can able to know this is the point of explanation. So TU is here maximum and constant. You can write here TU is the maximum and constant here. TU is maximum, max I written, and constant. Okay, constant where on the point here. TU is the maximum and constant. With the help of that we can able to know. Here we can able to write mu is 0. Mu equal to 0 on which point? On that point. Mu is 0. Okay, dear students, these are the explanation. With the help of that you have to know each and every topic, and this is the very important part. Okay, here mu is going minus, and here it should be showing positive. Here you know it is a positive line and it should be a negative line. Mu is going negative on the downside. Mu is here positive. ये आपको वहाँ क्रॉस न दिख रहा हो, ये प्लस का साइन है. With okay, with the help of that you can able to know these all things. This is the point, we can say point of satisfactory. यहाँ हम कह सकते हैं ये वो पॉइंट है जहाँ हमें पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. This point is a satisfactory point, point of okay, satiety. This is the important part. With the help of that you can able to know these are the important thing. Okay, dear students, with the help of this you have to complete your note, and this is the very important part for your education. So dear students, please make this graph and make your proper note and revise it well. So dear students, it should be a very important for you. That's why I had made here. Okay, dear students, it should be very important part for you. So very important thing I am going to say, please subscribe my channel and share this video to your friends also who is related to the commerce classes, otherwise who is preparing for UPSC, SSC, civil service, IAS, IPS, whatever. These are very important topic for these all things. So dear students, you have to subscribe my channel and share this video to your other friends also. Thank you all.